वेलकम टू डेली एमसीक्यू क्विज। आज का टॉपिक है यूपीएससी करंट अफेयर्स। 10 क्वेश्चन हैं, हर करेक्ट आंसर पर 1 मार्क। 10 आउट ऑफ 10 मतलब ऑफिसर कैटेगरी। स्कोर कार्ड स्क्रीन पर है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। Consider the following statements about the proposed expansion of Lok Sabha strength. 1. The Constitution Amendment Bill 2026 proposes increasing seats from 543 to up to 850. 2. The proposal includes 33% reservation for women. 3. The expansion requires lifting the delimitation freeze imposed by the 42nd Amendment. Which of the above statements is are correct? अपना आंसर सोचिए। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, जल्दी आंसर कीजिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1, 2 एंड 3। चलिए समझते हैं। ऑल 3 करेक्ट। द बिल प्रोपोजेज अप टू 850 सीट्स, 815 स्टेट्स प्लस 35 यूटीज विद 33% women reservation. The delimitation freeze, originally by 42nd Amendment, extended by 84th, needs to be lifted. Question number 2. Consider the following statements about India's water crisis as highlighted by recent contamination events. 1. Waterborne disease outbreaks in Chansa, Haryana were linked to governance failures in water management. 2. India's water crisis is primarily a supply problem, not a governance issue. 3. Urban water contamination events highlight the need for decentralized water quality monitoring. Which of the above statements is are correct? अपना आंसर सोचिए। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, जल्दी आंसर कीजिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1 एंड 3 ओनली। चलिए समझते हैं। स्टेटमेंट्स 1 एंड 3 करेक्ट। छांसा इवेंट्स वर गवर्नेंस फेलियर्स। डिसेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग इज नीडेड। Statement 2 wrong. India's water crisis is a governance and infrastructure problem, not just supply. Question number 3. Consider the following statements about the Kalai to Hydroelectric Project. 1. It is a 1200 megawatts project located in Arunachal Pradesh on the Lohit River. Though it is being implemented as a joint venture between NHPC and Arunachal Pradesh government. 3. The CCA approved investment of over 14,000 रुपए crore. Which of the above statements is are correct? अपना आंसर सोचिए। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, जल्दी आंसर कीजिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1 एंड 3 ओनली। चलिए समझते हैं। स्टेटमेंट्स 1 एंड 3 करेक्ट। कलाई 2 इस 1200 मेगावाट ऑन लोहित रिवर। सीसीए अप्रूव्ड 14,105 रुपए 83 पैसे crore. Statement 2 wrong. It is THDC India Limited and Arunachal Government JV, not NHPC. Question number 4. India's first shore-to-ship methanol bunkering was conducted at which port? अपना आंसर सोचिए। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, जल्दी आंसर कीजिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, कांडला। चलिए समझते हैं। India's first shore-to-ship methanol bunkering was conducted at Deendayal Port Authority, Kandla, Gujarat. This is part of India's push towards green shipping corridors. Question number 5. Consider the following statements about the Womania initiative. 1. It is on the government e-marketplace, GEM. 2. Over 2 lakh women entrepreneurs have secured orders worth over 28,000 crore rupees. 3. It was launched under the Ministry of Women and Child Development. Which of the above statements is are correct? अपना आंसर सोचिए। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, जल्दी आंसर कीजिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली। चलिए समझते हैं।
स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 करेक्ट। वुमानिया इज ऑन जेम 2.1 लाख women with 28,000 रुपए क्रॉर ऑर्डर्स। Statement 3 wrong. It is under Ministry of Commerce and Industry, not Women and Child Development. Question number 6. Consider the following about India's decision on COP33. 1. India withdrew its bid for hosting COP33 in 2028. 2. South Korea remains the sole bidder. 3. India's decision was influenced by the need to balance climate expectations against development priorities. Which of the above statements is are correct? अपना आंसर सोचिए। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, जल्दी आंसर कीजिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। चलिए समझते हैं। ऑल 3 करेक्ट। इंडिया विथड्रू फ्रॉम कॉप 33 बिड, साउथ कोरिया इज सोल बिडर, and India's decision was about balancing global climate expectations with national development priorities. Question number 7. Consider the following about Strait of Hormuz disruptions. 1. Nearly 90% of cargo backlog at India's major ports has been cleared. 2. The disruptions were linked to Iran-related tensions. 3. India imports all its crude oil through the Strait of Hormuz. Which of the above statements is are correct? अपना आंसर सोचिए। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, जल्दी आंसर कीजिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली। चलिए समझते हैं। स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 करेक्ट। 90% बैकलॉग क्लियर्ड एट मेजर पोर्ट्स। डिसरप्शंस फ्रॉम इरानस इजराइल टेंशंस। Statement 3 wrong. India imports from multiple routes including Africa and Americas. Question number 8. Consider the following about Mahatma Jyotirao Phule. 1. He founded the Satyashodhak Samaj to fight caste discrimination. 2. He and Savitribai Phule established the first girls' school in India at Pune in 1848. 3. He was a contemporary of Bal Gangadhar Tilak and worked closely with him. Which of the above statements is are correct? अपना आंसर सोचिए। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, जल्दी आंसर कीजिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1 एंड 2 ओनली। चलिए समझते हैं। स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 करेक्ट। फुले फाउंडेड सत्यशोधक समाज 1873। He and Savitribai opened first girls' school at Bhidewada, Pune, 1848. Statement 3 wrong. While contemporaries, Phule and Tilak had opposing views on caste reform. Question number 9. Consider the following about RBI's scale-based regulation for NBFCs. 1. It classifies NBFCs into 4 layers: base, middle, upper, and top. 2. Draft amendments for identifying NBFC upper layer have been released. 3. The amendments remove the requirement for public consultation. Which of the above statements is are correct? अपना आंसर सोचिए। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, जल्दी आंसर कीजिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1 एंड 2 ओनली। चलिए समझते हैं। स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 करेक्ट। SBR framework has 4 layers. Draft amendments for NBFCUL identification released. Statement 3 wrong. Amendments specifically invite public consultation, not remove it.